chapter number 1, alphabetical order. Now today I am explaining chapter 2, sentences. Before I am explaining in detail chapter 2, sentences, I'll ask some questions. What is alphabet? Alphabet means A, B, C, D, E, F, G, H, etc. so on are called alphabet. Now, how to make words? Yes, from the groups of letters we have to make words. Now, how to make sentences? From the groups of words we have to make sentences. Okay? Now, let's see the examples. Read these groups of words. Example number 1, like I cartoons. Yes, in this sentence, it is not a proper order. Groups of words are not in a proper order. So, we have to arrange in proper order. Next, second one, in the garden. In these groups of words, it's a make sense, but it's not a complete sense. Now look at here. Do these groups of words make sense? इन दोनों sentences के sense है, मतलब उसका कोई meaning निकलता है? No, it's not a complete sense. The first group of words does not make any sense. Okay? मतलब ये first group of words है, उसमें कोई meaning नहीं निकलता है. The second group of words make sense, but not complete sense. उसका meaning निकलता है in the garden, मतलब garden में, but not complete sense, मतलब उसका पूरा sentence नहीं है. Now read these groups of words. Now we have to make these groups of words in a proper order and also it is in a complete sense. So I'll read example number 1. I like cartoons. Yes. Look at the sentence. Subject is given, verb is given, object is given. So it is a formation of the sentence. Subject plus verb plus object. Now we will move forward on example number 2. Meena is walking in the garden. Meena is a subject. Is walking. They both the words are included in verb and in the garden are included in object. So in this sentence formation is also in a proper order and we can say the sentence is in a complete sense. Now these groups of words make complete sense and are called sentences. ये groups of words है, उसका जो complete sense होता है उसे कहते हैं sentences. I repeat again, these groups of words make complete sense. ये दोनों groups of words की sense complete है, मतलब उसका meaning complete है and are called sentences. Now I'll give you the definition of sentences. A group of words that makes complete sense is called a sentence. जो groups of words है उसका complete sense है is called a sentence. I repeat, definition of a sentence: a group of words that makes complete sense is called a sentence. Now we will move forward on next point. Let us read some more examples. I have written here more examples. Now look at the example number 1. My umbrella. Look at the sentence. My umbrella. ये complete sense दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है. Complete sense नहीं दिख रहा है. तो we have to put cross in front of this sentence. From my house. इसमें भी complete sense दिख रहा है? नहीं. From my house. ये पूरा sentence नहीं है. So in front of this sentence we have to put cross. Now next example. School, a playground, my house. This sentence also not in a proper order. So in front of this sentence we have to put cross. Now next one. That is
my umbrella. Look at the sentence. Yes, that is a subject. Is included in verb and my umbrella object means in this sentence is in a proper order and also in a complete sense. So in front of this sentence we have to put right. तो हमने यहाँ पे right put up किया है. Now look at the sentence. We have to make a sentence at that time. A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamation mark. And the third thing you have to keep in your mind, it makes complete sense. मतलब आप जब सेंटेंस बनाओ तब आपको 3 चीजें याद रखनी है. पहले तो जब भी आप सेंटेंस शुरू करो तो वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए और दूसरा आपको देखना है कि वो सेंटेंस कंप्लीट सेंस में है कि नहीं. और तीसरा थिंग है कि आपको एंड में फुल स्टॉप लगाना है अगर जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो, ठीक है. अगर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है और अगर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, माय स्कूल इज फार फ्रॉम माय हाउस. लुक एट द सेंटेंस. My school is a subject. Yes, is included in verb. Far from my house पूरा object है. Means ये sentence order में दिया गया है, complete order में और उसका meaning भी निकलता है. तो हम इस sentence के सामने क्या करेंगे? We have to put tick right. Now next one. My school has a playground. ओके, मेरे स्कूल के पास क्या है? प्लेग्राउंड. सो यहाँ पे माय स्कूल सब्जेक्ट, हैज वर्ब, ए प्लेग्राउंड ऑब्जेक्ट. सो दिस सेंटेंस इज फॉर्मेशन इज अ सेंटेंस. ये सेंटेंस का फॉर्मेशन दिया है. सो वी हैव टू टिक राइट इन फ्रंट ऑफ दिस एग्जाम्पल. ओके, नाउ लेट्स सी exercise A. Tick right the sentences and cross those which are not. जो सेंटेंस प्रॉपर है ऑर्डर में और तो उसका मीनिंग भी निकलता है तो उसमें हम क्या करेंगे? राइट. अगर जो सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं निकलता है, देन वी हैव टू पुट क्रॉस. सो लेट्स सी सेंटेंस नंबर 1. Suhana is my best friend. Okay, so Suhana is a subject. Is verb. My best friend is included in object. So in this sentence, all the words are in a proper order, and we can say it's a complete sense. Okay, इस sentence में पूरा meaning भी निकलता है. So in front of sentence number 1 we have to tick right. Next, second number. Happy I am very today. In this sentence all the words are not in a proper order. पहले तो proper order में भी नहीं है तो meaning कैसे निकलेगा? ठीक है. So in front of sentence number 2 we have to put cross. Now look at the difference between in sentence number 1 and in sentence number 2. दोनों में meaning different है, ठीक है. उसमें इसमें meaning नहीं निकलता है और इसमें meaning निकलता है और दोनों में एक difference और भी है. जो sentence number 1 है वो capital letter से शुरू किया गया है और उस sentence का end full stop से किया गया है. But look at the sentence number 2. इसमें कैपिटल लेटर भी नहीं है और फुल स्टॉप भी नहीं है. जब भी सेंटेंस लिखो तब भी सेंटेंस में कैपिटल लेटर होना चाहिए. हम जब सेंटेंस स्टार्ट करें तब और सेंटेंस एंड करो तब फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे नहीं है तो we have to put cross in front of sentence number 2 and we have to put
right in front of sentence number 1. Now we will move forward on sentence number 3. The phone is ringing. Yes, phone बज रहा है. Look at the sentence. The phone is included in subject. Is ringing. Yes, ringing also we have included in action verbs. Okay, ये बज रहा है continuously. तो subject plus verb means the sentence is in a proper order, and also we can say it is in complete sense. So in front of sentence number 3 we have to take right. Now let's see sentence number 4. In the market. अब ये सेंटेंस है ना, उसका मीनिंग निकलता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस में नहीं है. इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. सो इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस नंबर 4 वी हैव टू पुट क्रॉस. नेक्स्ट नंबर 5. Is not Jyoti neighbor mommy? Look at the sentence. In this sentence, all the words are not arranged in proper order. ये proper order में arrange किए गए नहीं हैं. So we have to put cross in sentence number 5. अगर proper order में arrange नहीं किया गया है, तो उसका meaning भी कोई नहीं निकलता है. Now let's see sentence number 6. Birds are singing. Okay, so birds क्या कर रहे हैं? Singing. So look at the sentence. Birds we have included in subject, and are singing, both the words are included in verb. Means in this sentence all the words are arranged in proper order, and also we can say it is in a complete sense. So in front of sentence number 6 we have to put right. Now number 7. Singing birds. Look at this sentence. Singing birds. यहाँ पे दो ही words है और वो proper order में नहीं है. We cannot make sentence without verb. Verb के बिना यहाँ पे हम sentence नहीं बना सकते. Verb है लेकिन singing है तो वो verb ही कहलाते हैं. बट यहाँ पे दूसरा कोई sentence proper order में नहीं है. ये sentence meaningful नहीं है. So we have to put cross in front of sentence number 7. Now next, number 8. Calling is mother Rohan. Look at the all groups of words are not arranged in proper order. ये सारे groups of words है वो proper order में arrange नहीं किए गए हैं. So we have to put cross in front of sentence number 8. हम इसमें भी क्या करेंगे? Cross. Now next, sentence number 9. What is your name? Yes. Here, which sentence is given? It's a question sentence. यहाँ पे question पूछा गया है. आप भी अपने friends नए friends बनाए होते हैं तो आप भी पूछते हो ना What is your name? यहाँ पे मैंने question पूछा आपका नाम क्या है. तो यहाँ पे हमने sentence end कौन से punctuation mark से किया? Yes, question mark से, क्योंकि यहाँ पे question पूछा गया है इसीलिए. So we can say sentence number 9 is a complete sentence. So in front of sentence number 9 we have to take right. Now number 10. The door is open. The door is open. Look at the sentence. Here the door is included in subject, is included in verb open. We can say it is included in object. So in this sentence all the groups of words are arranged in proper order, and we can say the sentence is in a complete sense. So in front of sentence number 10 we have to take right.
the sentence. Sentence number 1 to sentence number 10. हमने जहाँ पे क्रॉस किया है ना, वहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है और कई जगह पे कैपिटल लेटर भी नहीं है. Means if we want to make a sentence, we have to keep in our mind 3 key points. मैं आपको 3 key points देती हूँ, वो आपको याद रखने हैं. First key point, a sentence begins with a capital letter. जब भी आप सेंटेंस बनाओ तभी आपको सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है. नाउ द सेकेंड की पॉइंट आई गिव यू, इट मेक्स कंप्लीट सेंस. जब भी आप सेंटेंस बनाओ तब सेंटेंस को देखना है कि इसका पूरा मीनिंग निकलता है कि नहीं. और द थर्ड थिंग, द सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें एंड में फुल स्टॉप आएगा. अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसमें एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. अगर कोई सडन फीलिंग्स वाला कोई सेंटेंस है तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क पुट अप करेंगे. सो यू हैव टू ऑल द 3 की पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, आभार.